चमकीले चमकीले पल हैं, बरसे झिलमिल करते लाखों तारे। अलबेले अलबेले तन है, लचकीले लचकीले तन है, कोई अपना दिल कैसे न हारे। ओ मैं तन, मैं मन, मैं जान, मैं जगह, होश भी जोश भी, मैं सब, मैं अब। क्या धुन है क्या तान, सुन ले करके तू कमाल, सुन ले बाबो रे बाबो रे बाबो रे। कोई आगे उगलता रे, कोई तार पे चलता रे, कोई गेंद उछाले रे, कोई मौज संभाले रे। ओ देखो रे भैया, कोई घूमे बन के भैया, कोई ऊपर से सलांगा मारे रे। देख देख बाजी कर देखो, पैर ऊपर नीचे सर देखो, देखे मैंने जो ये खेले नारे। अरे मैं तन, मैं मन, मैं जान, मैं जगह, होश भी जोश भी, मैं सब, मैं अब। बाबो रे बाबो रे बाबो रे, बाबो रे बाबो रे बाबो रे। बाबो रे क्या धुन है क्या तान, सुन ले करके तू कमाल, सुन ले बाबो रे बाबो रे बाबो रे। यारो यारो केसरिया बाल में पीहू प्यारी राबा, सियावानी सा पधारो हरे देश पधारो हमारे देश रे पधारो हरे
Those were fantastic performances. They deserve a big hand. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. Our freedom fighters lit the flame of independence with their struggle and determination. Let's relive the courage, the sacrifice, and the spirit that paved the way for our nation's independence. This evening, our students present a tableau depicting glimpses of that glorious journey. Through this presentation, we pay tribute to the heroes who gave us a free nation. Let us watch with pride and gratitude the tableau on India's freedom struggle. Inqilab Zindabad. हम अंगुल काटकर अपना ऋषियों के चरणों में अर्पित करते हैं. बचपन तक अपना अक्सर शौर्य को समर्पित करते हैं. सिकंदर की शमशीर झुका दी भारत के फौलाद ने. शासन को नाकाम कर दिया एक वीर आजाद ने. खेल जगत को हिला दिया कोहली सान्या नाम ने. इतिहास बदल के दिखा दिया हमारे महाराणा प्रताप ने. आज हम इस नाटक के माध्यम से मध्य भारत और आधुनिक भारत की एक झलक देखेंगे. भारत भूमि का इतिहास शौर्य और बलिदान की गाथाओं से भरा पड़ा है. इन्हीं वीरों में से नाम है महाराणा प्रताप का. सन 16वीं शताब्दी में जब विदेशी साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था, तब मेवाड़ की धरा पर जन्मा यह वीर शेर विदेशी आक्रांताओं की अधीनता स्वीकार करने की बजाय कठिन जंगलों, पहाड़ों और कटीले राहों को चुनता है. प्रताप केवल तलवार के धनी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के भी प्रतीक हैं. आइए देखते हैं एक झलक. ले हाथ खड़क कंधे भाला, सीने में धधकती ले ज्वाला. चेतक संचल कूच पड़ा, बने शूर वीर वो टूट पड़ा. ओ माटी मेवाड़ारी. स्वामी, ये संघर्ष कब तक चलेगा? किले, महल, सुख सुविधाएं सब छूट चुकी हैं, परंतु आपके हृदय की ज्वाला आज भी वही है. रानी, सिंहासन और वैभव से बड़ा है मातृभूमि का मान. जब तक मेवाड़ की धरती पर एक भी शत्रु का कदम रहेगा, प्रताप चैन से कैसे बैठ सकता है? पिताजी, क्या मैं भी तलवार चलाना सीखूंगा? क्या मैं भी आपके साथ दुश्मनों से लड़ूंगा? पुत्र, तलवार तो लोहे की होती है, मगर सबसे बड़ी ताकत है साहस और आत्मसम्मान. तुम्हें प्रतिज्ञा करनी होगी कि अपने प्राणों से अधिक अपनी मातृभूमि की रक्षा करोगे. यही तो प्रताप का वंश है, जो कठिनाइयों में भी झुकना नहीं जानता. हम महलों में नहीं, जंगलों में रह लेंगे, परंतु परतंत्रता कभी स्वीकार नहीं करेंगे. सुन लो संसार, प्रताप सिर झुकाकर जीना नहीं जानता, मगर स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक रणभूमि में खड़ा रहेगा. यह थे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और स्वाभिमान से संपूर्ण भारत भूमि को यह संदेश दिया कि स्वाधीनता से बढ़कर कोई धन, कोई वैभव, कोई सुख नहीं होता. आज भी हल्दी घाटी की माटी उनकी तलवार की चमक और उनकी अडिग प्रतिज्ञा का प्रमाण है. महाराणा, तुम्हारा बलिदान आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाएगा कि स्वाधीनता से बढ़कर कोई धन नहीं. तुम मेरे वीर पुत्र हो, तुम्हारी तलवार मेरे गौरव का प्रतीक है. सन 1931 वह कालखंड जहां अंग्रेजी हुकूमत कांप उठी थी 3 नौजवानों की गूंज से. भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव. आज ये तीनों देशभक्त अपने अंतिम समय में भी हंस रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपनी कुर्बानी पर गर्व है. जहां माँ अपने बेटे से मिलने आई है. आइए देखते हैं एक झलक. सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है.
कितना है जोर, कितना बाजुए कातिल में है। बेटा, क्या सचमुच तेरा साथ बस इतना ही था? मैं जानती हूँ कि तू देश के लिए जन्मा है, लेकिन माँ का दिल कैसे समझाए खुद को? माँ, आप ही ने तो सिखाया था कि देश सबसे ऊपर है। जब तक भारत माँ गुलाम है, तब तक बेटे का सुख अधूरा है। मुझे गर्व है कि मैं इस मिट्टी के लिए बलिदान दे रहा हूँ। हाँ माँ, हम जानते हैं कि हमारी यह कुर्बानी इन लाखों युवाओं की नसों में बिजली भर देगी। हमें मौत से डर नहीं, असली डर तो यह है कि आने वाली पीढ़ी अगर उठ खड़ी ना हुई तो यह आज़ादी का सपना अधूरा रह जाएगा। बेटा, तुम सबको देखकर मेरा दुख भी गर्व में बदल जाता है। मैं जानती हूँ तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। माँ, मेरे बाद मेरी आंखों में आंसू मत देखना। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि तुम सिर ऊंचा करके कहो, यह मेरा बेटा था जो देश के लिए हंसते हंसते फांसी चढ़ गया। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हे भगवान, मेरे बच्चों का बलिदान इस धरती को आज़ाद कराए। और फिर इतिहास का वह क्षण आया जब इन तीनों वीरों ने हंसते हंसते फांसी को गले लगाया। उनकी गूंज आज भी हर भारतवासी के दिल में बसती है। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। जो मिट गए वतन पर उनका यही मान होगा। आज़ादी के इन दीवानों को सारा जहां याद करेगा। मेरे बच्चों, तुमने हंसते हंसते अपने प्राण मुझे अर्पित किए। तुम्हारे बलिदान से यह धरती हमेशा गूंजेगी। मध्य भारत की पावन धरती पर जन्मे ऐसे महापुरुषों ने भारत के आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा दी। यहाँ महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का दीप जलाया। पंडित नेहरू ने आजादी के सपनों को राजनीति में रूप दिया और इंदिरा गांधी ने राष्ट्र की सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। आइए देखते हैं एक झलक। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हमारा रास्ता हिंसा का नहीं बल्कि सत्य और अहिंसा का है। अगर हमें अंग्रेजों से स्वतंत्रता लेनी है तो हमें सत्याग्रह के मार्ग पर चलना होगा। बापू, मैं आपके मार्ग से सहमत हूँ, लेकिन युवाओं का जोश अब उबाल पर है। वे तुरंत बदलाव चाहते हैं। हमें आज़ाद भारत का सपना दिखाना होगा। पिताजी, बापू, मैं भी देखती हूँ कि देशवासी आपके पीछे उठ खड़े होते हैं। ये लड़ाई केवल आप पुरुषों की नहीं बल्कि हम महिलाओं की भी है। भारत माँ की रक्षा करना हर पुत्र और हर पुत्री का कर्तव्य है। स्मरण रहे, सत्य और अहिंसा ही हमारी असली शक्ति है। अगर यह दीप बुझ गया तो आज़ादी अधूरी रह जाएगी। और जब ये आज़ादी आएगी तो हम एक नए भारत का निर्माण करेंगे जहां हर इंसान बराबर होगा। मैं प्रण लेती हूँ कि इस देश की आज़ादी को बचाए रखने के लिए मैं अपना जीवन समर्पित कर दूंगी। और ऐसे ही गांधी जी की अहिंसा, नेहरू के सपनों और इंदिरा जी के संकल्प ने भारत को आजादी की ओर अग्रसर किया। आज हम सब उन महापुरुषों और महान नारियों को नमन करते हैं जिनके त्याग और बलिदान से यह राष्ट्र स्वतंत्र हुआ। गांधी, नेहरू, इंदिरा, तुम्हारे सत्य, तुम्हारे सपने और तुम्हारा साहस भारत को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करेंगे। तुम्हारी यह राह आज़ादी का नया सूरज लाएगी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की। ये है नया भारत जहां विज्ञान, तकनीक और सेना की शक्ति से यह भारत आत्मनिर्भर बना है और इससे नेतृत्व दे रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके संकल्प
और माँ के संस्कार से यह भारत आत्मनिर्भर बना है। आइए देखें आधुनिक भारत का यह प्रेरक दृश्य। भाइयों और बहनों, आज भारत जल, थल, वायु और अंतरिक्ष हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। हमारे वैज्ञानिक, हमारी सेनाएं और हमारे युवा सब मिलकर 21वीं सदी का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं वह विज्ञान हूँ जिसने चांद और मंगल पर भारत का तिरंगा लहराया। मैं गांव-गांव तक शिक्षा और तकनीक लेकर पहुँचा हूँ। मैं जल हूँ, जीवन का आधार। आज भारत ने हर घर जल और स्वच्छता का संकल्प लिया है। मैं थल शक्ति हूँ, सीमाओं की रक्षा करना ही मेरा धर्म है। मैं वायु शक्ति हूँ, भारत का आसमान मेरी गर्जना से गूंजता है। आज का भारत केवल सपने नहीं देखता, बल्कि उन्हें साकार भी करता है। यह भारत है विज्ञान का, सेना का, संकल्प का और माँ के आशीर्वाद का। यह वही भारत है जो हर दिन आसमान को छू रहा है। ये है मेरा नया स्वरूप, जहाँ विज्ञान, सेना और संकल्प सब मिलकर आकाश को छूते हैं। मेरे बच्चों, तुम्हारे परिश्रम से मैं विश्व गुरु बनूंगी। जय हो मेरे वीर भारतवासियों। सत्य और अहिंसा भारत की आत्मा है। आज़ाद भारत हर एक नागरिक का सपना है। मैं इस देश की शक्ति और सम्मान की रखवाली करूंगी। हमने जो बलिदान दिया है वही आजादी की नींव है। स्वाभिमान से बढ़कर और कुछ नहीं है, यही मेरा संदेश है। भाइयों और बहनों, यह है आत्मनिर्भर भारत, विज्ञान, युवा और सैन्य शक्ति से परिपूर्ण। भारत अब आकाश को छू रहा है। भारत जीवन की धारा को संजो रहा है। भारत की धरती अब सुरक्षित है। भारत का आकाश गूंज रहा है। भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान। That was a powerful tableau. Let's give them a big hand. The love for our nation flows in every heartbeat and echoes in every soul. Through melody and lyrics, they remind us the values that make our nation great. Let us welcome them as they sing for the love of India. ये देश हमारा है, हमको अति प्यारा है। इस धरती को हमने माँ कह के पुकारा है, माँ कह के पुकारा है, माँ कह के पुकारा है। ये देश हमारा है, हमको अति प्यारा है। इस धरती को हमने माँ कह के पुकारा है, माँ कह के पुकारा है।
fantastic performance. Let's keep the patriotic spirit alive with another applause. Why are you walking like this? My objective was just to highlight the significance of models through fashion show. Grace, strength and elegance define the spirit of India. Now, our students bring alive the heritage and diversity of India on the ramp. The fashion show, Colors of Pride India. With every step, they showcase confidence, beauty, and the essence of nationality. Let us applaud and welcome our young models as they take the stage with pride and poise. सादगी भरा वेश पर विचारों में अपार गहराई, हाथ में धर्म ग्रंथ, मन में राष्ट्र का कल्याण। उन्होंने सिखाया कि शक्ति केवल तलवार में नहीं, बुद्धि में बसती है। उनकी चाल में है आत्मविश्वास, उनकी दृष्टि में है नीति का प्रकाश। आज इस मंच पर हर कदम के साथ गूंज रहा है संदेश। प्रस्तुत है महान नीति निर्माता, अर्थशास्त्री और गुरु आचार्य चाणक्य। ताज भी झुका, हारी तलवार भी, जब रजिया ने जंग पे तैयारी सवारी। न सिर्फ रानी एक मिसाल बनी, दिल्ली के तख्त पे लिखी कहानी बनी। ना पर्दे का बंधन, ना खौफ का राज, उसकी निगाह पे था जज्बाए ताज। तलवार के साए में लिखा उसने कानून, रजिया सुल्तान एक चमकता जुनून। Here comes the man whose single spark ignited the flame of India's first war of independence, Mangal Pandey, dressed in the spirit of patriotism and rebellion. He stands tall, fearless and unyielding. With every step on this ramp, he reminds us of 1857, the moment when one soldier dared to challenge an empire. Mangal Pandey, the name that echoed through history, the warrior who turned revolt into revolution. मैं रानी लक्ष्मीबाई, महाराज गंगाधर राव की पत्नी, नवलकर वंश की वधू, प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक मेरे श्वास में प्राण है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक। She led her troops in the revolt of 1857 with fire in her heart and dignity in her stride. Every step she takes today reflects the strength of a warrior, the pride of a queen, and the soul of India's first woman freedom fighter. Behold, Begum Hazrat Mahal, the lioness of Awadh, the queen who dared to stand against an empire. While warriors fought on the battlefield, another warrior fought in the classroom with chalk and courage. She opened the doors of learning for every girl, presenting to you
Anandi Gopal Joshi, a name so bright. She turned her struggle into guiding light. From pain and loss, her purpose grew to heal the world, to start anew. In foreign lands, she sailed afar with courage, her only guiding star. First Indian woman to earn the degree of doctor, a symbol of victory. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল। आ रहे हैं वो व्यक्तित्व जिनकी कलम ने भारत की आत्मा को शब्द दिए, जिनकी रचनाओं ने संगीत, साहित्य और देशभक्ति को एक धागे में पिरो दिया। रविंद्रनाथ टैगोर। आज इस मंच पर उनके हर कदम से झलक रही है कला, संस्कृति और आत्मसम्मान की झलक। प्रस्तुत है भारत रत्न, कवि, दार्शनिक और विश्व कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर। In chains of fear, she lit the flame. The tricolor rose in her name. When fear ruled hearts and silence spoke, she raised the flag through fire and smoke. A woman of courage, calm yet strong. Aruna marched where freedom belonged. The rose on his heart, the child in his eyes. He dreamt of a nation that touches the skies. Builder of India with vision so new. The modern India began with Nehru. चाचा नेहरू, हमारे प्यारे चाचा नेहरू। A woman of steel, calm and brave, she led her nation through storm and wave. Her courage fierce, her will divine. Indira Gandhi stood the Shakti of modern time. A heart so pure, a soul so bright, you lit the world with heaven's light. When pain was deep and hope was gone, you came with love, a gentle dawn. You touched the poor, the sick, the small, and saw the face of God in all. No crown you wore, no throne you claimed, yet hearts remember your blessed name, Mother Teresa. मदर हमारी, तू है दीनों की प्यारी। ममता में मदर हमारी, ओ माँ मदर टेरेसा, संत मदर टेरेसा। Dr. APJ Abdul Kalam, the missile man from the shores of Rameshwaram to the stars above. He carried India on wings of love. A dreamer, a doer, humble yet grand. Kalam, the soul of this sacred land. A man of vision, humble and wise, who built his empire yet touched the skies, with kindness as wealth and heart so true. Ratan Tata, India bows to you. In the silence of cinema,
His voice still roars, a thunder that echoes through silver doors. The Shahanshah of words, of heart, of might, Amitabh Bachchan, India's guiding light. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। She walks with grace, her head held high, a spark of strength in every eye. Her heart is pure, her soul divine, a queen in spirit, her light does shine. Not just beauty, but courage rare, a voice for truth beyond compare. With love and pride, she stands again. The world salutes you, Sushmita Sen. Cool as the moon, sharp as the flame, victory follows wherever he came. The calm commander, the legend we see, Dhoni, the pride of our country. Born with wings of imagination and courage in her heart, she broke the boundaries of earth and soared into space, becoming a symbol of women's empowerment and India's pride. Tonight, as she walks this ramp, her attire reflects the limitless sky. Kalpana Chawla, the astronaut who proved that no dream is too high and no sky too far. Wings of duty, heart so brave, she turned a flight into lives she'd save. Fearless, selfless, her story divine. Neerja Bhanot forever shine. A fighter, a mother, a spirit so strong. Her every punch sings a victory song. She taught the world what courage can be. Mary Kom, the power of she. She rose from silence, forged in flame. Duty her breath and honor her name. Where others wavered, she chose to stand, writing her story with a soldier's hand. No storm could break, no night could chain the fire that runs in a fearless vein. A woman of steel with a heart so pure. Sophia Qureshi, the strength that will endure. संतों वीरों की जननी, संस्कृति हो जिसकी महान, नाज करे हम सब जिस पर, वो मेरा हिंदुस्तान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। हम बुलबुलें
That was a mesmerizing show on Colors of Pride. India on the ramp. Let's put our hands together and cherish it. Ashi, what do you think about our school's educational philosophy and extracurricular activities? Could you please help me enhance my understanding? Yes, of course, Divyanshi. As we all know, every institution has a story, a journey of dreams, dedication, and milestones. Our school has nurtured talents, celebrated achievements, and created countless memories over the years. Today, we proudly present a documentary titled Our School's Journey and Achievements. This film captures the essence of our growth, accomplishments, and the spirit of our community. Let us witness and celebrate the remarkable journey of our school together. A child's journey into school marks the beginning of a lifelong adventure in learning, where every step taken opens new doors to discovery, wonder, and growth. Father Ragnell Co-ed Senior Secondary School has been a pillar of quality education for over 2 decades. Inspired by our founder, Father Franklin Rodriguez, we constantly strive for excellence. Our mission is to empower Agnellite boys and girls to excel academically, morally, and in life skills, preparing them for a bright and successful future. Our patron, Father Agnello de Souza, was a humble and devoted priest who lived a life of service. We carry forward his legacy with the same spirit of dedication and care. Hello everyone. I'm Mrs. Nidhi Sisser. I have been a part of Father Ragnell's school for past 18 wonderful years. This journey has been truly enriching. I feel proud to belong to an institution that nurtures values and inspires young minds every day. Wishing you all a joyful and memorable annual day celebration. Thank you. Nestled away from the bustle of Bhopal city, our campus offers a serene atmosphere, scenic beauty, and architectural charm, creating an ideal environment for wisdom and learning. नमस्कार, हमारे विद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे विद्यालय में बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। खेलकूद, स्मार्ट क्लासेस, अनुभवी शिक्षक, सांस्कृतिक गतिविधियां हमारे विद्यालय की पहचान है। At the heart of Father Agnell Co-ed Senior Secondary School's vision is our esteemed manager, Reverend Father Harold Da Silva. With his guidance and dedication, the school continues to inspire excellence, nurture values, and empower every Agnellite to grow, shine, and succeed. It's been almost 15 years of my life I've been part of this educational institution. This institution has taught me many lessons. One of the crucial lessons as a student I have learned is Mansa Vacha Karmana, which means vision, passion, and action. Double pride for Father Agnell family. Our beloved principal, Reverend Father Manohar Kata, SFX, has been honored once again, this time with the Visionary Educator Award at Samavesh 2025 Bhopal chapter, organized by Artemis EduSolutions at the Radisson Hotel, Bhopal. Father Manohar Kata was conferred the Visionary Educator Award under the Elite 25 Educators category. After receiving the Mimamsa Educators Award 2024 last year, this back-to-back recognition celebrates our principals' inspiring leadership and commitment to empowering education through innovation. Congratulations, Father Principal. We are proud of your relentless dedication and visionary spirit. Each dawn begins with a promise anew to strive for excellence in all we pursue.
With faith as our compass and values as our guide, we march together in Agnelite pride. Each day begins with the morning assembly, where we come together in prayer, invoking God's blessings for the day ahead. This daily tradition fosters a sense of belonging and instills core values in every Agnelite. Father Agnel Co-ed Senior Secondary School is an institute where we gain knowledge, values, discipline, honesty, hard work, and many more qualities for our life. Our digital classrooms are equipped with advanced teaching tools that make learning interactive and engaging. The spacious and well-ventilated classrooms provide a comfortable and stimulating environment for students. Our well-equipped laboratories offer students hands-on experiences in chemistry, physics, biology, mathematics, and computer science, providing an ideal setting for experimentation, innovation, and discovery. Our library is truly a house of wisdom, holding over 15,000 books across a wide range of subjects. It opens up endless possibilities for students to expand their horizons of knowledge. Father Agnel Co-ed Senior Secondary School help in developing a student's personality, confidence, and ability to follow the directions. School Choir. Our school choir, led by Maestro Rio Fernandez, is the voice and soul of Father Agnel School. With their melodious harmonies, they lead us in prayer, perform at assemblies and celebrations. Under the expert guidance of Maestro Rio, students develop not only musical skill but also confidence, discipline, and teamwork, singing with heart, faith, and unity. Our cultural clubs notice record participation, nurturing talent in art, literature, and performance. These activities not only entertain but also enrich our students' critical thinking and collaborative spirit. Our school provides a peaceful prayer room for people of all faiths. Inclusive space where students and teachers can reflect and find inner peace. Hi, I am Razala Khan. I have been associated with Father Agnel School from last 8 years. My journey in Father Agnel School as a PGT history is full of enriching moments. Along with the academics, school also work on the curriculum activities, sports and value-based activities of the students. Our staff rooms are designed to be welcoming and functional spaces, featuring comfortable seating, quiet zones, easy access to refreshments, and areas for relaxation and collaboration, fostering a positive environment for our teachers. Every Saturday, the school comes alive with the spirit of sportsmanship. Students enthusiastically participate in various games, from football and cricket to basketball and badminton. Our school provides extensive opportunities for holistic development through sports, arts, and cultural activities. Our students have brought laurels to the institution by excelling in inter-school tournaments and cultural competitions, winning numerous medals and certificates. To promote physical fitness, discipline, and self-defense skills, our school offers Taekwondo classes conducted by the one and only Master Sachin Saxena. His expert guidance and dedication inspire our students to stay strong in body, mind, and spirit, learning the true meaning of strength through discipline and respect. Our focus on holistic fitness has been stronger with all students embracing the spirit of play and competition. Investment in our sports facilities ensures every student has the opportunity to unlock their athletic potential. We celebrate diversity and unity by joyfully observing international, national, and regional festivals from Diwali and Eid to Independence Day and Women's Day. Our transportation system covers nearly all parts of the city. All buses are equipped with surveillance cameras, ensuring that the safety and security of our students remain our topmost priority. A good school is characterized by a supportive management, a safe learning environment, excellent resources, and qualified teachers, and all this is found in our school. A well-maintained sick room with first aid facilities and resting beds ensures that any medical needs are attended to promptly, prioritizing the safety and well-being of our students. Father Agnel Co-ed Senior Secondary School is a place where hearts and minds unite to chase knowledge day and night. Father Agnel Co-ed Senior Secondary School is more than just an institution.
It is a place where tradition meets modernity and where values and vision come together to shape the leaders of tomorrow. Join us as we nurture dreams and prepare the next generation for a future that belongs to the learned. India 2040, Tech 2040. My friend, why are you behaving like a robot? Oh, I got it. We are representing India 2040, Tech and Dreams, colors of modern India. India is a land where tradition meets innovation and dreams take flight with determination. Our young visionaries imagine a future where technology and creativity shape their nation's progress. Our students present a skit titled Colors of Modern India, India 2040, Tech and Dreams. Let us watch with pride and curiosity as they bring India of tomorrow alive on stage. India, a land of dreams, ideas, and unstoppable energy. Today's story is about how our young minds turn dreams into reality, shaping a modern India for tomorrow. Good morning, ma'am. Good morning, class. Class, today's topic is very special. India 2040, the dream we build today. Ma'am, will India have flying cars by then? Maybe, but India's future is not just about gadgets. It's about us. Now, tell me, what kind of India do you dream of? I dream to be an entrepreneur, creating jobs and new ideas. I want to see green energy everywhere. No smoke, no pollution. I want healthcare to reach even to the smallest village of India. I dream of an India where robots and AI help us in schools, hospitals, and homes. I dream of inventing machines that explore space beyond Mars. Ma'am, will robot do all our homework? Funny, but possible. AI may help, but remember, technology should be used with wisdom. Years passed. Our young heroes step into the real world. It's not easy. Ideas need money, teamwork, and courage. The dreamers grew up, wiser and braver, but still carrying the same fire within them. Today, their dreams face the real world, where ideas must prove their worth. Team, investors meeting today. Are we ready? AI prototype ready. Clean energy model ready. Good morning, everyone. You have 5 minutes to convince me. Young blood, tell me, why should I invest? So, imagine an India where AI guides farmers, solar powers
in every school, and technology builds equality. Nice dream. But will it make money? It will make India rich in education, in power, and better future citizens. See this light? It's powered by solar AI. No wires, no external batteries, just lighting and innovation. Well, you have convinced me. You have earned your chance. Let's make this dream real. That handshake wasn't just a deal, it was a turning point. The young dreamers had proved that faith, hard work, and unity can turn imagination into impact. The year is 2040. India has become the land of innovation and compassion. A young team of scientists works on a dream to create robots that will make life better for everyone. चांद को करके रहेंगे आज ओवरटेक हम पूरा चांस है 3, 2, 1, boom. It's time. After years of research, our creation is ready. We call it Sakha 2040, a robot made not just with metal, but with purpose. Will it really be able to help people in real life? Not just help, it will transform lives in hospitals, farms, schools, and everywhere. Sakha, show us how will you teach children? Welcome to India 2040, a land where classrooms have no chalk dust, no shouting teachers, only smart robots and brighter minds. Hello, I am Sakha 2040. I speak Hindi, English, Tamil, Bengali, Marathi, and Bhojpuri. Wow, can you teach me maths? Yes, 2 plus 2 equals samosa. Sorry, system update. 2 plus 2 equals 4. See, even robots make mistakes, but at least they are funny. I am programmed to make learning fun and tasty. And look, they run entirely on solar power. No pollution, no electricity bills. Correct. I am 100% eco-friendly. My favorite food is sunlight. And so technology touches every home, from bustling cities to the quietest villages. Modern India is not just about gadgets. It's about using science with compassion and dreams with action. Startups give jobs. AI gives knowledge. Clean energy gives power. And all this gives hope. Each of you is a builder of tomorrow. Every small action counts, whether planting a tree or studying with dedication. And I will grow up in the India
you build. The dream of tomorrow is built today, and together we will build an India that shines bright. India 2040 begins with us. Modern India. Our dreams. Our duties. The performance, the message, and the vision for India's future was incredibly inspiring. Let us give them a thunderous applause. Dance is the language that transcends time, culture, and tradition. Our next performance is a fusion dance, blending diverse styles into a harmonious rhythm. Every step tells a story, every movement expresses a blend of our culture and emotions. Let us welcome them as they take us on this vibrant journey, rhythm and expression. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, mi música los tiene. Ponte bailando y se baila así. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. Se danza, ma chérie, la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. Y Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue mundial. No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me fait bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3,
cuentas a nadie. Tenemos tú y yo algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde. No le rinde cuentas a nadie. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Que se me paren que lo que viene es pa' que le dé. Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar. Lo que me gusta es que tú te dejas llevar. Todo lo que quieres ella sale a vacilar. Mi gata no puede janguear porque ella le gusta la gasolina. Wow, the fusion dance was absolutely electrifying. The energy, the rhythm, and the blend of dance styles were mesmerizing. Let's put our hands together and cherish it. Now, it is a time to express a heartfelt gratitude. We are honored to invite our Reverend Father Manager, Harold Da Silva, to deliver the vote of thanks. A very happy and colorful evening, Honorable Chief Guest, Mr. Saket Malviya, IAS Director, Employee Selection Board, respected guest of honor, Father Victor Rebello, the Provincial Kolkata Province, all the Reverend Fathers, brothers, sisters, respected principals of reputed institutions, dear parents, and my beloved Agnelite family. As we draw the curtain on this magnificent evening of celebration, Hamara Bharat Mahan, India, our colorful dream, my heart overflows with immense gratitude and pride. Today our hearts are drenched in the colors of India. Indeed, we have witnessed the true essence of India, her vibrant spirit, her unity in diversity, and her timeless values shining through every performance. On behalf of the management, staff, and students of Father Agnel School, I feel privileged to extend words of gratitude to all who have made this evening a memorable symphony of colors, culture, and creativity. First and foremost, I bow in gratitude to the Almighty, whose blessings have guided and graced every moment of this event. I also, on behalf of the management, express an apology for a delay of half an hour due to some technical failure, as we started the program at 6 o'clock instead of 5:30. But God was with us and all of you are still with us. A deep sense of gratitude to Honorable Chief Guest, Mr. Saket Malviya, for joining us in this grand celebration and for sharing his inspiring words that have truly enlightened and motivated us all. With equal warmth, I extend our heartfelt appreciation to our esteemed guest of honor, Reverend Father Victor Rebello. Father, your presence has added sanctity and grandeur to this occasion. I sincerely thank Father Principal, Reverend Father Manohar Kata, for steering this institution with vision and love. You are the soul behind every success that blooms here. I am grateful to all the teachers who added true colors to this celebration. Through their dedication, they shape young minds and hearts that make Hamara Bharat Mahan. I take immense pleasure also in thanking our parents for their trust and support. Together we can design the canvas of India's tomorrow with bright colors of hope, values, and vision. A big thanks to all the performers, our students, whose enthusiasm and captivating presentations have filled the evening with a spirit of unity, pride, and patriotism. I extend our gratitude to all the committees, technical and backstage teams,
supporting staff and the volunteers whose unseen efforts have been the heartbeat of this event. A heartfelt thanks to the media, press, and caterers for their valuable contribution in making this event smooth and memorable. As I conclude, let us carry home the message of tonight's theme, that India's greatness lies not only in her achievements, but in her unity, her culture, and her humanity. Let us promise to keep this flame of Hamara Bharat Mahan alive in our words, our deeds, and our hearts. Once again, I thank each and everyone present here for your gracious presence and loving support. May God bless us all abundantly, and may our beloved nation shine forever. Jai Hind. Thank you, Reverend Father Manager, for your words of gratitude. Let us now hear to the holy verses. A line taken from Bhagavad Gita. Vidya Vinay Sampanne Brahmane Gavi Hastini Suni Chaiva Swapakecha Pandita Samadarshina. Which means to develop equality and compassion towards all beings, regardless of their caste, species, or social status. A verse taken from Holy Bible, Matthew chapter 7, verse 12. So, in everything do to others what you would have them do to you. This means you do the same with others what you want to be done with you. A verse 13 has taken from Holy Quran, Surah Al-Hujurah. This means that everyone is fundamentally equal. श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंग 708 हम नहीं तेज बुरा नहीं कोई प्रणवति नानक करे हो सोही. This means I'm not good and no one is bad. One who realizes this by renouncing his ego, praise Nanak God, saves such people from the ocean of this world. As we approach the culmination of this joyous celebration, it's time for our grand finale. Our students are ready to present Colors of Unity, a spectacular tribute to togetherness and harmony. Through dance, music, and expression, they will celebrate the spirit that binds us all as one. This performance reflects diversity, friendship, and the beauty of coming together. Let us welcome them with thunderous applause as we witness the colors of unity light up the stage. Hamara Bharat Mahan, India, our colorful dream. Father Agno, school's grand finale song. India, 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 our colorful dream, We thank you all. India, my colorful dream, from mountains high to rivers that gleam. Saath hi chale, hand in hand. This is our Bharat, our shining